Hello students, in previous part we have discussed about the introduction about reproduction, and now in this part we will discuss on asexual reproduction. What do we mean by asexual reproduction? The reproduction only in which only one parent is required, means the new offspring produced from the single parent, that is known as asexual reproduction. Now we will discuss on different types of asexual reproduction. Types of asexual reproduction. There is different types of asexual reproduction. Firstly, we will discuss the first part is fission. Fission means breakdown. A parental cell break down into two or more than two daughter cells. That process is known as fission. The reproduction, the mode of reproduction in which a parental cell body breaks down in two or more daughter cells. That process known as fission. मीन्स फिजन में एक पेरेंटल सेल की बॉडी दो में भी टूट सकती है, दो से ज्यादा में टूट सकती है. इसका मतलब दो में टूट सकती है वो एक डिफरेंट टाइप का, दो से ज्यादा में टूटती है वो डिफरेंट टाइप का. सो फिजन इज बेसिकली टू टाइप, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन. जो फिजन प्रोसेस है दैट इज बेसिकली टू टाइप, बाइनरी फिजन और multiple fission. Binary fission, as the name shows, binary means a parental cell divided into two daughter cells. That is known as binary fission. In this reproduction, a parental cell body breaks down into two daughter cells. That is called binary fission. For example, amoeba. Amoeba is a single celled organism. In favorable condition, this is an amoeba. When it got favorable conditions, its body divide into two daughter cell. अब दो daughter cell में divide होती हैं और दोनों से there are two amoebas are produced. Firstly, the cell shrink start from the center. Firstly इसमें क्या होगा कि सेल बीच से shrink होना स्टार्ट होती, मीन्स साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, उसके बाद न्यूक्लियस का डिवीजन, and finally it change into two daughter cell, and both the daughter cells are identical to their parent. So it means it forms clone. यहाँ पर clone formation होता है. It again goes adult phase, means birth लिया, birth के बाद adult phase, reproductive phase में आता है, उसके बाद growth करता है फिर बॉडी में. इस प्रकार एक से फिर दो में भी प्रोड्यूस हो जाते हैं. Reproduction can be continued. इसमें क्लोन बनते रहते हैं. फर्स्ट, द सेकेंड थिंग इज दीज ऑर्गेनिज्म आर इमोर्टल. इन ऑर्गेनिज्म की कभी डेथ नहीं होती. क्यों? इनकी ही बॉडी से न्यू सेल डेवलप हो जाती हैं. दीज आर immortal. They produce their next one, so we can say that they never die. And multiple fission, the fission process या reproduction process in which a single parental cell divide more than two daughter cell. In this, the parental cell breaks down, parental cell body
breaks down into more than 2 daughter cell. That is called multiple fission. इसमें क्या होता है, दिस द सिंगल ऑर्गन. सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल इसमें प्लाज्मोडियम में दीजिए प्लाज्मोडियम. फर्स्टली इट कंटेन्स, सपोज दिस इज द प्लाज्मोडियम, इट कंटेन्स न्यूक्लियस. इसमें जब मल्टीपल फ्यूजन होता है तो फर्स्टली क्या होगा, न्यूक्लियर का डिवीजन होता है. डिवीजन ऑफ न्यूक्लियर कैन टेक प्लेस. 2 2 to 4 4 to 6 6 to 8 मीन्स इस प्रकार डिवीजन होता रहता है. डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस कैन टेक प्लेस एंड आफ्टर दैट cell shrink from the center and it breaks down into 2 pieces. 3 4 4 8 12. Suppose these are the 18 nucleus. Then when the cell break down into 2 daughter cells, cytoplasm का जब डिवीजन होता है तो each cell contain half of the nucleus. 5 and 4 9. It also contain 9. So in this division क्या होगा कि इसमें ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार का डिवीजन होगा. अदरवाइज when it gain the many more nucleus, the cell membrane may break down. तो इसमें क्या होगा, बहुत से न्यूक्लियस बाहर आकर के न्यू सेल में डेवलप हो जाते हैं. This type of division can also known as multiple fission. Firstly, this one occurred. And plasmodium which contain a single nucleus and unfavorable condition, the nucleus may division into many times, and finally the cell membrane break down and the many more plasmodium can be reproduced. So it is called multiple fission. The next one is, you can see that budding. Budding process. A new organism can develop from a bud. The mode of reproduction in which a new organism developed from a bud, that is called budding. This budding process is basically 2 types. The buds are produced 2 types: exogenous bud and endogenous buds. Exogenous bud and second one is endogenous bud. Exogenous, it also represent, exo means exit, बाहर, बॉडी से बाहर बड प्रेजेंट हो, so that is known as exogenous. If the buds are produced inside the body, then this is called endogenous. Exogenous के एग्जांपल आप दे सकते हैं yeast, fungi and hydra. Yeast, suppose this is the yeast. अब इसमें जो बड बनता है तो क्या होता है कि ब्रेक डाउन हो गए सेल मेम्ब्रेन, इसके बॉडी से बाहर ही इससे अटैच रहती है, न्यू बड प्रोड्यूस हो जाता है. और जैसे ही बड मैच्योर होता है, डिटैच हो जाता है, एक यीस्ट से दूसरी यीस्ट प्रोड्यूस हो जाती है. दिस मेक द एक्सोजीनियस बडिंग प्रोसेस इन यीस्ट. इसी वजह से हाइड्रा के अंदर हाइड्रा इज अटैच्ड विद द सबस्ट्रेटम, ए सॉलिड स्पॉट, and it may contains tentacles. इसके भी बॉडी के बाहर क्या होता है कि बड बनना शुरू हो जाता है. And when this hydra may mature, it detach from the parental body, it forms a new hydra. So it is known as, it is a part of exogenous budding process, yeast and hydra. Endogenous bud process, it means the buds are produced inside the body, and the first example is spongilla.
Spongilla, a freshwater organism. Freshwater organism. This is the body of outer body of Spongilla. It may contain many spore. It may contain many pores. The body is tiny pores, teeny pores. So it may contains many pores. This is the inner body structures. And the buds are produced at the inner body structures membrane. When the body means buds produce inside the body. इसमें थे outside the body और इसमें bud कहाँ बने inside the body. जब बहुत से bud produce हो जाते हैं, these buds are known as gemmules or you also can say that gammules. इसकी बॉडी के अंदर बड बनते हैं और बड को क्या बोलते हैं जेम्यूल या गैम्यूल्स. और ये बड को फिर क्या करता है माउथ के द्वारा बड को बॉडी से बाहर फ्रेश वाटर में सिक्रेट कर देता है. द न्यू स्पॉन्जिला में प्रोड्यूस. गैम्यूल्स जो बनते हैं, गैम्यूल्स बॉडी के स्ट्रक्चर के अंदर जो इनसाइड बॉडी लाइनिंग है उनके ऊपर बनते हैं. इनसाइड बॉडी लाइनिंग सॉरी इट डजंट कंटेन एनी पोर्स. तो एक मतलब काफी गैम्यूल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं. जस्ट आउटसाइड द गैम्यूल्स ए सम आउटग्रोथ आर प्रोड्यूस विच प्रोटेक्ट द गैम्यूल्स. दीज आर नोन एज स्पाइरेकल मेड अप ऑफ कैल्शियम्स carbonate and they provide the protection to the formation या formed new gemmules. When the gemmules are produced in excess amount, these gemmules or gemmules are secreted into the fresh water by the mouth. So this is the endogenous budding process. In next part we will discuss in the about different type of asexual reproduction.